उसके एक्सक्यूज बाद में देगा, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब उसका ऊपर डायरेक्ट आएगा कि मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से आपने जो ये काम किया है। तो ये बिल्कुल साहब सही बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू को हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू आया होगा। Right. Thank you, Nagendra sir. We are force of 2,65,000 more, about 2,65,000. Right, Virendra sir. Such incidents can be counted on fingers. And one odd incident cannot be generalized. Apart from this, there are other tools with the command to see whether the things are being done in a proper manner or not, or whether there is any breach of trust. There are other agencies working in border as well, apart from BSF. But at the same time, as I said, within the unit also, there are other tools with the commandant who give regular feedback to command what is happening at the border. So that is why things never go unnoticed. Thank you so much, Virendra sir. Thank you so much. I apologize to Mohit for taking over. Thank you, sir, for your insights. No, that's perfectly fine, Soumya. You have actually, initiated a very good discussion, and Virendra sir and Ashwini sir has given a very good examples as well. So this is what is actually required when we are talking about trust, the live examples and the input. So, sometimes what happens is the individual's responsibility. It's not about the organization. So I totally agree. When there is low trust, people tend to behave like that. But when there is high trust and there is a great bonding of trust between the leaders and the people within, so definitely it will take to wonders, to heights. Thank you. So I have a lot of inputs from the team. GR Singhi sir said that suffocating, yes, when you are at low level place, low with energy, you feel adverse effects are there. Negativity is all around, Nagendra ji said, and survival may be very difficult, Pramod ji said. So yes, overall organization will function, will be paralyzed, and the effect would be very, negatives. Insecurity is the feeling which you have. Feel unsafe always. Absolutely so. So now my question to you is on this, that how does a working environment where there is a high trust level, how would you feel there? And what kind of working environment that there would be? Any inputs here? So the working environment will be safe. Safe, feeling and conducive. Conducive. The system will be Transparent also. Mohanji, safe, by safe you mean like what? Physically safe or mentally safe? Can you explain it? Physically and mentally safe, a feeling of security, a sense of security. Lack of initiative. Transparency of system. Okay. Transparency. High level of motivation. High level of motivation. Sir, lack of security, you said. I'm sorry if I've heard it wrong. Lack of initiative. Lack of initiative, I'm sorry. Where there is a high trust level, there is a lack of initiative, sir. Opposite हो गया, ये जो point हो गया, opposite. Lack of initiative. This is for the place where you have high trust levels. People will be low trust level. Yeah. They Okay. will be highly motivated. Yes. They will be charged Lack up. of initiative. There will be roaring environment. The ambience would be pleasant, and the output will be better on a bigger scale. Working smoothly, Nagendra ji said, and confident said by Suresh ji. We can have working smoothly. Result oriented, yes. So like if I give my example, for an instance, me working with AITD. So here the high level of trust would come from the top management, high level management. So I feel amazing working here and enjoy working. So
that's what happens when you're working at a place which has high trust levels. Now, going further, so the research says that where there is high trust level or where there is low trust level, what exactly happens? So moderate zone is where you're not sure. Sometimes it's okay, sometimes it's people are participative, some क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है. So बहुत आप केयरफुल हैं, आप बहुत सोच समझ के वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ इनडिफरेंट टाइप का माहौल रहेगा वहाँ पर, जहाँ पे मॉडरेट जोन है ट्रस्ट का. लेकिन जहाँ पर हाई है वहाँ पे कॉन्फिडेंस जोन है, वहाँ पे विन विन सिचुएशन है. विन विन एज इन विन फॉर सीनियर लेवल एंड विन फॉर जूनियर लेवल बोथ. तो अगर जूनियर ये फील कर रहा है कि ओके माय लीडर इज ऑल्सो ट्रस्टिंग मी, एंड लीडर अगर फील कर रहा है कि यस माय टीम माय बटालियन ऑल्सो इज ट्रस्टिंग मी, सो वहाँ पर सपोर्टिव माहौल रहेगा, सेफ कंड्यूसिव रहेगा, प्रोडक्टिविटी हायर लेवल पे रहेगी. और यहीं पे अगर आप लो लेवल पे जाएं, वहां पे सस्पिशन जोन है, तो वहां पे विन और लूज. तो जो सबऑर्डिनेट्स और जो जूनियर लेवल के लोग हैं उनको लगेगा कि हम लूजिंग कंडीशन में हैं और हायर लेवल इज ऑलवेज विनिंग. सो इट इज लाइक वी आर ओनली गिविंग इनपुट्स एंड वी डोंट हैव एनी इनपुट्स एंड एनी फीलिंग्स फ्रॉम एनी इनपुट्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. सो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, थ्रेटनिंग रहेगी, अनप्रोडक्टिव माहौल रहेगा. मोटिवेटेड ऑपरेशंस एडमिन, यस संजय जी, गुड नेम ऑफ यूनिट, यस. तो हाई लेवल में वो रहेगा. Yes, sir. कॉर्पोरेट की यदि बात करें तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा लो यदि ट्रस्ट है तो. ट्रस्ट नहीं है तो राइट सर. हाँ, लो ट्रस्ट इज लो. तो यदि कॉर्पोरेट की बात की जाए तो ताला लग जाएगा फैक्ट्री में. एब्सोल्युटली सर. सर आजकल एक और लेवल इसके आगे आ गया है जो कि है टॉक्सिक जोन. टॉक्सिक जोन में वहां पर यह है कि लोग और ज्यादा एक दूसरे को मतलब डिस्ट्रस्ट करने लगे. ट्रस्ट की एब्सेंस की बात नहीं, डिस्ट्रस्ट की बात आ गई. तो वहां पर अगर कोई अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है या फिर उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है. सो दैट इज अगेन अ टॉक्सिक जोन. आप लोग रिसर्च करिए, कुछ एरियाज हमारे जो है टॉक्सिक जोन में पहुंच चुके हैं. सर अभी ये कॉर्पोरेट्स में रिसर्च है इस चीज का हो रहा है. प्रमोद सर, आई एम सॉरी, प्रमोद सर, आपने अभी कहा कि हमारे कुछ एरियाज है. वुड यू लाइक टू एनलाइटन, वुड यू लाइक टू से इट? व्हाट, गिव अस सम इनसाइट्स सर प्लीज. हमको भी थोड़ा इनसाइट्स दीजिए सर. यार नौकरी कर लेने दो यार, 3-4 साल की नौकरी बची है. नौकरी के बाद मिलेंगे तो हम करेंगे रिसर्च. ठीक है सर, नोटेड. I'll personally reach out to you for this. हम आपके यहीं से कर लेंगे, सब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना. और मैं रिसर्च कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, यू आर मोर देन वेलकम सर. हाँ, अभी रहने दो यार, नौकरी कर लेने दो, बच्चे अच्छे पालना है, छोटे हैं अभी. ठीक है सर, ठीक है ना. यस सर. वैसे गुरिंदर बैठा हुआ है, ये हाईएस्ट जो है वो लेके जो है बैठा हुआ है. हमारे एरिया का सामान तो आधा यही ले जाता है. Sir, any comments? Govinda sir has no comments right now. नहीं है सर कॉल पे. Mohit, please do continue. Yeah. Sure. Thank you very much. So absolutely, उस पे हम और डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे. So talking about environment of trust upsides, उसमें टीम परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस भी बढ़ती है इक्वल लेवल पे. तो टीम बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी. तो दैट्स व्हाट इट इज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रस्ट एनेबलर्स एंड ब्लॉकर. सर आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, आप लोग फोर्सेस में इतने टाइम से हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो कि ट्रस्ट एनेबल करती हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि ट्रस्ट ब्लॉक करती है? लेट्स टॉक अबाउट एनेबलर्स फर्स्ट. तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि ट्रस्ट एनेबल करती है? Direct communication. Direct communication, absolutely. Yes, sir. And frequent interactions
अशोक जी आपने बता रहे हैं अनस्टेबल पर्सनालिटी, ये किस चीज के संदर्भ में है सर? They are very much alert. अगर किसी की पर्सनालिटी में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, बिहेवियर अगर उसका स्टेबल नहीं है, तो कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। राइट सर, ये है मेरे कहने का। एब्सोल्युटली सर। उस केस में तो आप लोग उसको हायर भी नहीं करते हैं, आप लोग पहले ही फिल्टर कर देंगे। नहीं, ये ऐसे भरा हुआ है। हायर करने वाली बात नहीं है। फोर्सेज में सिलेक्शन का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, और ये जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन के दौरान आप सभी के बिहेवियर को पूरा का पूरा जज कर लें। सर लेकिन ट्रेनिंग के दौरान करके आती हैं। सर जो ट्रेनिंग होता है आप लोगों का, उसमें रिगरेसली पर्सनालिटी बंदे की पता पड़ जाएगी। अगर अनस्टेबल पर्सनालिटी का इंसान है तो वो आप लोगों के साथ में जेल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोग तो टीम वर्क में ज्यादा बिलीव रखते हैं, और अनस्टेबल पर्सनालिटी टीम वर्क कर ही नहीं पाएगा, तो वहीं पे वो फिल्टर हो जाएगा। वो मैं कहना चाह रहा था। नहीं, ये लोअर रैंक में इसको तुरंत का तुरंत जज करना बहुत मुश्किल है। बाद में जा करके निकल करके आता है। 2 साल 4 साल 5 साल की नौकरी के बाद पता चलता है कि क्या है। और हायर रैंक में अगर ऑफिसर्स लेवल पे आप देखें तो इतना जल्दी वहां पर भी जज नहीं कर सकते आप, जब तक कि उसका परफॉर्मेंस ना देखें, उसके ऊपर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है तो क्या है। राइट सर। कौन सी सिचुएशन में किस तरह का उसका बिहेवियर है। आई टोटली एग्री। महेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, आप ऐड कर रहे थे। ये आपने क्यों शो किया है? ये क्या चीज सर? ऑल दी सी व्हीकल्स क्या है? सो ये इस तरह से है कि ट्रस्ट अनेबल हमारी जैसे रुकावटें क्या है, हमारा रास्ता है एक, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो में है, और क्या क्या ऐसी रुकावटें आ रही, क्या ब्लॉक कर रहा है हमारे वे। ये सारे थॉट्स हैं, ये सारी शीप्स जो हैं प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है, जो कि ट्रस्ट जैसे कोई ओपन नहीं है, या फिर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर कोई केयर टेकिंग नहीं है, गुड लिसनर नहीं है, तो ये सारे ब्लॉकर्स हैं। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि ब्लॉकर्स और अनेबलर्स क्या है ट्रस्ट के। तो इसमें आपका क्या कहना है कि अनेबलर क्या क्या है? लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज अनेबलर। यस सर। यस, वीरेंद्र जी कह रहे हैं लेवल ऑफ ट्रेनिंग। यस सर। ट्रेनिंग मैटर्स है, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग दे पुट इन द सेम grid generally more than 95%, 96%, 1 or 2% maybe, but after that one are the continuously putting on the duties, so they are coming up on the same level, everybody. ओके सर, ग्रेट सर। प्रमोद जी आप लिसनिंग स्किल्स पे बोलना चाहते हैं? बैड लिसनर तो सर ब्लॉकर हो जाएगा ना, अनेबलर तो गुड लिसनर होगा, इफ आई एम राइट। प्रमोद जी। नगेंद्र जी कह रहे हैं फीलिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रस्ट एनेबलर। सर फीलिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इन लाइक द अटैचमेंट। यस yes sir, sorry, attachment. Once he feels attached with that particular unit, and yes, you must see that like in forces, जैसे पहले अभी तो बंद हो गया लगभग, but generally you have some regimental functions, they used to celebrate their raising days. There are various other regimental functions used to be celebrated together. So this brings him closer to his unit, and once he find attach himself with that unit, certain shortcomings also he accepts. Like in a family, there are certain shortcomings, he accepts it as in that analogy only. So that feeling, if it is there, then definitely it is a trust enabler, where he tends to overrule or do away with certain shortcomings also. एब्सोल्युटली सर, ये आपने एकदम सही कहा है कि अटैचमेंट होगा तो ट्रस्ट अपने आप बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। There is a term in the forces. Which is called regimentation, and it is akin to what Mr. Otela is saying. Okay.
Thank you very much, sir, for adding it. Pramod ji, yes. अच्छा मिस्टर मोए, ट्रस्ट के रिगार्डिंग में मैं ये जो है आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है, बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी एक होड़ रहेगी कि कौन जल्दी से जो है इंफॉर्मेशन देगा। अब मान लीजिए हेडक्वार्टर को कोई इंफॉर्मेशन दे दी उसने। अब हेडक्वार्टर में जो भी बैठे हैं, चाहे मैं बैठा हूं, मेरा मान लीजिए कि मेरे जो है बॉर्डर से कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई। 2-3 चैनल होते हैं, ये चैनल से फास्ट आ गई इंफॉर्मेशन। आपने उसकी बात को सोच करके अपना जो है एक दिमाग माइंड मेकअप कर लिया, माइंड अपना बना लिया कि नहीं यार यही घटना हुई है। अब मैं जब ग्राउंड में जाऊंगा तो ग्राउंड में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बिना सुने हुए और हम उसी पिक्चर को पेंट कर देंगे। तो मैंने बात नहीं सुनी, मैंने जो हमारे और जो कमांडर्स हैं लोअर लेवल के, उनकी भी बात नहीं सुनी है। और जो हमें इनिशियली जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर हमने पूरा ट्रस्ट करके, अंदर ट्रस्ट करके, और सारी अपनी सिचुएशन को उसी हिसाब से पेंट कर दिया। तो हाँ, तो ये चीज जो है क्या होगी, ट्रस्ट ब्लॉकर से बैड लिसनिंग, इनकम्प्लीट, आपने सुनना ही नहीं है। तो इम्पेशेंट होना भी सर बोल सकते हैं कि ट्रस्ट ब्लॉकर हो गया है, कि आपने you were not alert, you were not attentive, and you were impatient, so you jumped to conclusion very fast. हाँ, यस, नहीं वो वेरी फास्ट नहीं है वहां पर, without being reasonable. एक ट्रस्टी का है ये जो है एक्चुअली में क्या क्लाइमैक्स है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। राइट सर। जब हम जो है जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई इवेंट को, जैसे कोई ऑफेंस हुआ है जी, मान लो कोई ब्रीचिंग में है या मान लो कनाइवेंस में है, ये पर्टिकुलर क्या है कि ऑफेंस है ये, इनसे हम जो है ट्रस्ट जो है वो नहीं कह सकते हैं कि भाई अब ट्रस्ट ही नहीं रहा है, और हम अपने दिमाग में बना ले नहीं यार सारे चोर हैं ये तो, और उसी हिसाब से हम देखना शुरू कर देंगे। तो ट्रस्ट वाला सवाल यहाँ पे हमारे हिसाब से नहीं आता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस हो सकते हैं, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे करके उनको रोका जाना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट कभी नहीं खोना चाहिए। यदि हमने ग्रांट कर दिया कि नहीं यार अब सारे चोर हैं, ग्रांट ले लिया उसको, तो समस्या है, तो प्रॉब्लम है। ट्रस्ट को हमेशा बना के रखना चाहिए, और एक कमांडर की जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट को हर हाल में मेंटेन रखना है। जो ट्रस्ट करने लायक भी नहीं है, वो ट्रस्ट जब उसके ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे तो एक समय में वो भी जो है ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, दिखाना शुरू कर देगा वो ट्रस्ट। तो हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज की जो है बहुत प्रॉब्लम है कि वो एक तो बैड लिसनर है और कंक्लूजन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। 10 मिनट में लोअर लेवल का भी यदि कोई रिपोर्ट दे देगा तो हार्डली जो है दिमाग लगा करके वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और उसी हिसाब से सारी पिक्चर को पेंट कर देंगे, और फिर किसी की नहीं सुनेंगे, ना कमांडेंट की सुनेंगे ना और लोअर लेवल की सुनेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन उसके अंदर यही ट्रस्ट ही काम करेगा, इसी का यही सॉल्यूशन है। और संजय जी ये बताना चाह रहे हैं कि रेगुलर कम्युनिकेशन, लिविंग बाय एग्जांपल, वेरी गुड सर। So integrity and self discipline. So a place is as good as person is. ये चीज मुझे याद आती है इससे कि living by example is the trust enabler. Very much well said sir. और सिंह सर बताते हैं, GR सिंह सर, belief and faith in each other is a trust enabler. Constant briefing and guidance. अंतर्यामी सर, very right. नगेंद्र सर कह रहे हैं टाइमली ग्रीवेंस रेड्रेसल इज ट्रस्ट एनेबलर। एब्सोल्युटली सो सर, कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट? कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस टाइमली ग्रीवेंस, ईगो एंड सो लो सेल्फ एस्टीम? मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि ट्रूप्स के अंदर आपका ग्रीवेंस, फॉर एग्जांपल
मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी एक ऐसी रात को पेट्रोलिंग में जा रहा था एंड आई फाउंड कि एक अपना जवान जो है लेटा हुआ है डेड, मतलब एक रात के 12 साढ़े 12 बजे के लगभग रोड के ऊपर डॉट ऑन जीरो लाइन और लेटा हुआ है। अगर हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती तो शायद उसको ओवररन कर देता। तो मैंने रोका उसको, आई फाइंड हिम डेड। और फोर्सेस के अंदर आप संतरी ड्यूटी में ऑफ एरिया के अंदर डेड ऑन बॉर्डर आप सो रखे हैं, इट्स ए वेरी सीरियस ऑफेंस। और आई फील वेरी अनॉयड कि क्या हो गया। तो मैंने उसको अगले दिन बोला, इसको यहीं बॉर्डर पे इसको मैं सजा दूंगा। मैंने उसको बुला लिया, कॉल किया, मैंने कहा कि इसको कल जो है सुबह मेरे पास में लाओ, आई विल पनिश हिम, और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा, टाइमली होगा, इमीडिएटली होगा। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम। तो जब उसको मैं अपने सामने बुलाया तो जब से पूछा तो इस सेट कि मैं तो पिछले 48 घंटे से सोया नहीं हूँ। तो मैं तो सो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बैठा ही था 5 मिनट के लिए और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। देन आई चेक द रिकॉर्ड्स। तो बॉर्डर हेडक्वार्टर में किसी कोर्स के लिए गया था, वहां से वापस आया रात को, कहीं बीच में गाड़ी खराब हो गई, उसके बाद में वो वेट करते रहे, खाना खाने के लिए आया, मैन पावर का थोड़ा क्रंच था, तो कंपनी कमांडर ने उसको बोला तुम अभी ड्यूटी करके आ जाओ, उसके बाद बुला लेंगे। तो आई फाउंड कि उसका जो ये रीजनिंग था, इवन दो जो ऑफेंस था एक बहुत सीरियस ऑफेंस था, लेकिन जो उसकी कहानी थी, जो उसकी स्टोरी थी, जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि उसकी उसमें गलती नजर नहीं आई और उसने जस्ट सोचा कि मैं 2 मिनट लेट जाता हूं, और उसको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जब हमने उसको हिलाया तब जाकर के उठा। एंड ही वाज नॉट ड्रंक आल्सो, क्योंकि ड्रंक के केसेस भी फोर्सेस के अंदर काफी मिलते हैं। तो वो सब चेक करने के बाद में आई जस्ट लेट हिम गो। तो मुझे लगता है जब उसका सुनने के बाद में आप जब सुन लेते हैं तो मैसेज गोज कि अगर आप ऑनेस्टली वट एवर रिप्लाई यू कैन गिव, अगर आप वो सीधा बोलते थे नहीं मैं सो नहीं रखा था, मैं तो जरा घास को देख रहा था, मैं वो देख रहा था, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस he just tell me he was asleep, he accepted that he was asleep, he doesn't know when the vehicle came। तो मेरे ख्याल से उससे क्या होता है कि बाकियों में बिल्टअप होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो आवर बॉस विल ऑलवेज टेक इट इन ए पॉजिटिव वे और उसको उसका रिडर्सल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक एग्जांपल है जहाँ पे कि आप ट्रस्ट को बिल्टअप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली, क्योंकि गलती हो गई है तो आप सजा दे दो, तो उससे कोई सॉल्यूशन होता नहीं। Absolutely, sir. Good one, sir. Good decision. Thank you very much for sharing. It was very useful. In fact, बहुत आई ओपनर है ये कि कितना एक लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग ऐसे मोमेंट पे। और एक ये अपॉर्चुनिटी भी सर नगेंद्र सर रहती है कि जब आप उसको एनकरेज भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम और उसके साथ में एक बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है। तो ये ट्रस्ट एनेबलर आपने बहुत सही बताया। मिस्टर मोहित, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो नागेंद्र जी ने जो बताया है। जी रमेश सर बताएं। जस्ट हाँ, सेम लाइक स्टोरी कि उन्होंने एज ए कमांडर जो है उन्होंने फील किया कि नहीं ये ही वाज एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि एक लड़का अभी 60 दिन का छुट्टी गया था और आकर के दूसरे दिन जो है एडिटर के सामने खड़ा हो गया कि सर मेरे को दोबारा छुट्टी जाना है। और वो जो है वो काफी उसके ऊपर जो है मतलब छुट्टी न देने के मूड से उसको काफी कुछ बोल दिया। तो फिर उसने इंटरव्यू भी लिया। तो इंटरव्यू मैंने भी पूछा कि भाई अभी तो 60 दिन छुट्टी काट के आए हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि तुम जाना चाह रहे हो अभी, कि ऐसी सी बात है। असल में हमने रियली बताना क्या एक्चुअल कहानी क्या है। तो सीधे सीधे बोलते हैं कि सर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने नई शादी की है इसलिए मेरा मन था कि जाने का। तो मतलब उसके बातों में सच्चाई आई और मैंने भेज दिया 15 दिन का सीएल दोबारा। और हंसी खुशी फिर बोला सर ऐसे लोग अगर कुछ कई बार होता है कि लोग रॉन्ग पेंटिंग करते हैं अपनी बात को सिद्ध साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, बट एक्चुअल में वो जो बोल रहे हैं वो नहीं है, जो नहीं है वो चीज होता है। तो गलत बोल करके लोग अपनी काम तो निकाल लेते हैं बट वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर एक को वन वे में अगर बोल दिया कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, तो एज ए कमांडर हमें भी सोचना चाहिए और फील करना चाहिए कि यस ही इज राइट, एंड अगर चाहता है तो हमें ऐसे ऑर्डर देना चाहिए। तो हाँ, इट्स ए लेसन लर्न्ड। रोतेला सही बोले उन्होंने
Good, yeah, good. सर Thank आपने you. रमेश जी सर आपने जो ये बात करी है ये आपने मतलब बहुत ही डीप बात कर दी, क्योंकि हम लोग आगे जो एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे उसमें ट्रुथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ ट्रूथफुल Absolutely. यू आर। तो वो आपने पहले ही बता दी और बहुत ही अच्छे से मतलब उससे कनेक्ट कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। So let's go ahead. Before that, I want to have Mohit yes, sir, sorry, I'm for intercepting. I think we can take a short 10-minute break, tea sure, break. Give our sure, commandant sir some time to breathe for you also, and definitely. then we'll resume at 4:35. All right. 35. Yeah. Thank you. Thank you so much. Oh, Thank you. okay. Thank you very much. So let's meet. Oh, sorry. तो स्टार्टर का काम करेगा अभी तो ये तो अभी इसको क्या बोलेगा यार, इसको क्या बोलेगा मूर्ति? हाँ स्टार्टर ले रहा है भाई। ये तो भोग में जाने से पहले कुछ नहीं खाते। मिशन जी नमस्कार इनको जरा सर। बंगाल वाले देखिए, सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा रहे हुए हैं। सॉरी मूर्ति सर, थोड़ा कट ऑफ कर दिया, वेरी सॉरी। सॉरी, नो इशू, थैंक यू, कैरी ऑन। Sorry sir. Welcome back sirs. Mohit sir, if you are here, Yes, we'd yes, like to please continue the session. definitely. Let me Off to you. share. Thank you very much. So thank you very much everyone. तो आगे बढ़ते हैं हम, और जब हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट एनेबलर की और ब्लॉकर्स की, तो मेरे को आप ये बताएं कि थिंक ऑफ समवन एट दिस पॉइंट, थिंक फॉर अ मोमेंट ऑफ समवन यू ट्रस्ट डीपली। कोई ऐसा हमारी लाइफ में होता ही है जिसको हम डीपली ट्रस्ट करते हैं। थिंक ऑफ द क्वालिटीज दैट दे हैव दैट गेट यू टू ट्रस्ट देम। कैन यू प्लीज शेयर व्हाट आर द क्वालिटीज इन दैट पर्सन? कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। I would share for that matter. If I trust someone deeply, so I trust them because of their openness, being what they are. Ashwani sir, Nagendra sir, Virendra sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Here, इसमें अगर इन केस अगर किसी को हम ट्रस्ट करते हैं तो उसमें 2-3 पॉइंट जो है हम मेरी तरफ से जो आ रहा है। एक तो सबसे पहले है कि वो खुश मिजाज हो, मतलब हंसमुख टाइप का हो, और दूसरा वो केयर टेकर हो जो कि केयर टेकर कर सके, और फाइनेंशियली जो है वो ईमानदार हो, और उसके पास कुछ ऐसी मतलब ट्रस्ट वर्दी टाइप का उसके क्वालिटी जो पास्ट उसके ट्रस्ट वर्दी जो भी चीजें उसको काउंट करते हुए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड सर कह सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका आपके साथ में अच्छा रहा, इस तरह से कह सकते हैं। Mr. Mohit, one most important thing to trust somebody is the belief that you can confide in him. Whatever you will tell, he will keep that thing with him, and he will not open that to others. And at the same time, if he is of the good moral value, he will not use that confidential nature of information for wrong purposes or his own benefit. So this is the most important thing. So good moral value and being loyal is one of the things, Vipin sir, that is there in the person you trust deeply. Is that right, sir? Okay, we have Antaryami sir has shared that his honesty, liveliness, रमेश सर ने भी बोला कि लाइवलीनेस, खुश मिजाज का हो, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि हम किसी के साथ में
हम ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, ट्रस्ट बॉन्डिंग। म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। नगेंद्र सर ने बताया सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी। घनश्याम सर ने बताया है हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट होना जरूरी है। देखिए, फर्स्ट क्वालिटी अगर आप किसी में ट्रस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो पर्सन है उसमें कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। verbal communication abilities as well as non-verbal communication activities. Strong It's communication. of paramount importance. If you don't have those communication skills, then you will not able to communicate your qualities on which the other person can trust upon you. And second thing is that you should be very professional in an organizational matter. You should be very professional, very impartial, and full of integrity, and the person who should confined in yourself, you should not ditch him on any aspect of time. Professional level pe, if anything happens, he knows that he will help me out in growing professionally or deal any situation which will be bothering me very professionally. Second thing is that he should have a belief in the person. He should be very honest. So these are some attributes which one should have to get the trust of his man. Absolutely, sir. I totally agree. For trust, I have like, trust is something which you, when you do, which when you're not being watched. जब आपको कोई देख नहीं रहा हो तभी आप उसी शिद्दत से काम कर रहे हैं, और जब आपने किसी को काम दे रखा है तो आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि they will do well, they will do, still they will do, perform well. So that is what trust is, both ways. So let me quantify one more thing by saying this. As a commander, if you are physically present only, then people work. That means they are just performing because you are present there. And the trust is such a tool. If your troops having trust in you, your physical presence is not required. Your intention is required. Intention communicated to them and they will perform. That is the highest level of trust that should be in any organization. Exactly, sir. I would like to One more add, thing I can add. Yes, sir. Please. Thank you, Ashwini, sir. I would like to add here, the person should be consistent. He should honor the promises he made. He should walk the talk he makes. Walk the talk. Consistent, yes, sir. इसमें So, मिस्टर मोहित जी सर, 3 traits है इसमें, सिंसियरिटी, लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन सेम जो है दोनों में होना चाहिए ये। सर रेसिप्रोकेशन हाँ, दोनों तरफ से होगा, रेसिप्रोकेट होती है ट्रस्ट की वैल्यू। तो उसमें जो बॉन्डिंग ट्रस्ट की रहेगी वो जो है लॉन्ग, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए उसको, Long lasting. लॉन्ग लास्टिंग। यस सर, वन थिंग आई वांट टू ऐड, यस सर। हम इस ऑर्गेनाइजेशन हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस पे ये भी हमको जरूरी है कि आप उस पर्सन के साथ विदाउट फीलिंग ऑफ रैंक एंड रैंक स्ट्रक्चर आप अपने एक दूसरे को कितना रिलेट करते हैं, कितना आप मतलब कि उसके साथ जुड़े हैं, मतलब कि अपने आप को उसके साथ भावनात्मक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे जो है आप उससे कितने मतलब कि बॉन्डिंग है उनके साथ, ये भी चीज जो है बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है आपके सबऑर्डिनेट्स और जूनियर्स के साथ में, वो ट्रस्ट वैल्यू बढ़ा देती है। यस, कैंपस की जो सबसे बड़ी खासियत है जिसके बारे में कभी किसी यस यस सर, आप वीरेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Nothing to add. सर प्लीज ऐड समथिंग टू इट। आप, आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनमें क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उनको ट्रस्ट करते हैं? नहीं, I have mentioned it is integrity. Integrity and loyalty. जी, These जी, are the most important aspects.
We have a lot of inputs. Dr. Suresh Sonkar sir ने बताया है कि honest and positive हैं जो जिनको वो trust करते हैं. Nagendra sir ने बताया not requiring constant supervision is what trust is. Okay. And Pramod sir, sincerity, loyalty and integrity. Thank you, sir. Accepting shortcomings and mistake. ये सबसे ज्यादा important है. I can think of a time when I started my career. So I had one of my seniors actually got me into some critical task. Though I was not confident about the task, he told me, be confident and I am always there for you. He just said 2 words and I still remember that. Now, while I was performing it, I was very scared that how I'm going to perform in this. But these 2 things helped me bring the trust कि perform भी करते हुए मुझे ये लगा कि हाँ, sir is always there for me and I can be free to ask him questions. I can always ask him question. I can always seek his advice and guidance. And that was the reason I was able to perform. So that is what the trust I think is. You promote and you encourage your juniors and the people who are under your team to perform. एक word है जो कि micro managing की हम बात करते हैं कि so you don't have to tell your people under you every time कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं करना है. Instead of telling them कि what is that you expect from them to. So the what, why and where should be clear. तो how के अंदर हम लोगों को we don't have to put a lot of energy. So I think this is what it is about. Now on the counterpart, we'll do one thing and we'll think of someone you don't trust completely. What is missing in them? ऐसा कोई होगा आपकी लाइफ में जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं अभी. That can be anyone. Personally, professionally, आप दोनों तरीके से ले सकते हैं. What is one thing that is missing in it? Breach of trust. यदि if observe at any time कि उसने किसी तरह का ब्रीच किया है ट्रस्ट के ऊपर, either it is जो है in loyalty, in sincerity, in integrity. Integrity तो acceptable है ही नहीं, वो तो beyond doubt होना ही चाहिए. बिल्कुल सर. इंटीग्रिटी तो जो है वो तो कंपल्सरी है ही, लेकिन खासतौर से सिंसियरिटी और लॉयल्टी. Absolutely sir. यदि so disloyal है, मतलब यही बताना चाह रहे हैं. Unpredictable behavior also count in. वो तो फिर आएगी नहीं उसमें. Unpredictable behavior. It is I think हम अगर it is process. Yes sir. Sir, unpredictable behavior से एकदम से लेकिन कंसिस्टेंसी इन सब चीजें ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेबल बिहेवियर से मेरा मतलब है कि आपके सामने कुछ और बिहेव करता है और जैसे ही आप एब्सेंस होते हैं, कहीं इधर उधर होते हैं, तो फिर वो उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है. मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा. कुछ आपके दोस्त हैं अच्छे, लेकिन उन्होंने पैसा मांगा, पैसा मांगने से अगर आपने मना कर दिया, देने से मना कर दिया, तो उनका जो एक टोन है, उनकी दोस्ती है, वो खत्म होती चली जाएगी. वो आपको ट्रस्ट करना ही छोड़ देंगे. वही सिर्फ एक कारण से कि मैंने इससे पैसे उधार मांगे थे, इसने दिए नहीं. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. कई बार कुछ बिल्कुल सर, ये सबके साथ में कहीं ना कहीं लाइफ में होता है. अगर किसी भी चीज से देने से मना कर दो तो उसमें भी आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है. बिल्कुल सर. तो घनश्याम सर, यहाँ पे क्या मिसिंग है? ये आपने बहुत सही चीज बोली और सभी के साथ होते हैं, सभी के दोस्त होते हैं और हम अलग अलग लाइफ में से आए हैं, कॉलेज लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से. मिसिंग यही है कि सेल्फिशनेस. मुझे ये डर है कि मेरे पैसे मर जाएंगे. मुझे पता है कि वो तो यार दोस्ती नहीं है तुम्हारी, फिर उससे दोस्ती नहीं है, पक्की नहीं है तुम्हारी दोस्ती. धन वापस नहीं मिलेगा. इसे उसकी परवाह नहीं, अपने पैसों की परवाह है इसको. पैसों की दोस्ती ठीक नहीं होती कभी, पैसों की दोस्ती होनी नहीं चाहिए कभी. सर तो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग. मैं ये लिख के दे सकता हूँ, काफी अफसरों के पैसे ऐसे मरे हैं उधार में.
लेकिन या एब्सोल्युटली सर, यहाँ पे मानसिंह सर ने बताया रिलायबिलिटी एंड एस्केपिज्म। सर एस्केपिज्म से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई पतली गली से निकलना चाह रहा है, इज दैट व्हाट यू? यस, ये बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई काम दीजिए, उसको मतलब जो ठगाना या उसको नहीं करना, अवॉइड करना कि ठीक है सर ये इसको दे दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर डाल देना, अपने आप को बचाना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना। ओके, वेरी वेरी ट्रू सर। ये भी एक रीजन है जहाँ पे हम जहाँ पे ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। और नगेंद्र सर ने प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी नॉट सिंसियर टू द असाइनमेंट बताया है। और संजय सर बता रहे हैं चेंजिंग स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन नॉट हेल्पिंग एट द टाइम ऑफ क्राइसिस बॉडी लैंग्वेज। सर तो मतलब संजय सर आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब अभी कुछ स्टेटमेंट है और बाद में कुछ स्टेटमेंट है, मतलब फ्लिप फ्लॉप है, कभी क्या और कभी क्या, तो वो लोगों Can I पे add ट्रस्ट नहीं here? किया। यस सर। The person will be not reliable. You'll be telling lies. Nice. Talks very pleasingly before you, but criticize about you on your back. Right, sir. So this is also one of the unpredictable or behavior. Pretentious, बिल्कुल सर। अंतर्यामी सर बिल्कुल जो बोलते हैं कि आप कुछ बोलना कुछ, करना कुछ, आपके सामने कुछ और है और किसी और के सामने कुछ और है। So great, absolutely, thank you for your inputs here. So ये चीज जो है ये shortcomings हैं पर्सनालिटी में और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। So I want you to break out in rooms and Soumya, we would be breaking out in rooms for 5 minutes, and I want sir to think here on a different perspective. So I want you to talk about trust enablers here and trust blockers as well. Now here we will be thinking from the point of leadership. What behavior a leader should have to enable the trust, to develop the trust amongst its team. So we will divide in teams and we'll be talking about trust enablers and trust blockers. What you as a leader would think about. Yeah. So can we break out in rooms for 5 minutes, sir? Yes, we can do that. And I think groups of 5. Yeah. I hope all sirs are clear with what they have to do. Pramod sir has said very wonderfully, absence of consistency is also one which breaks your trust, sir. Thank you. Yes, so everyone is clear, Soumya. So what we have to do is we have to think from the perspective of a leader, and we'll be into different rooms and we'll be talking about what are the trust enablers, what a leader should, how a leader should enable trust in its team, and what are the qualities which would block the trust by a leader. So we will discuss that. Right, Mohit sir, just to clear it out for our commandant sirs, is there like any amount of reverse responses, or is they free to? Yeah, absolutely. It's just to discuss, and then we come back. We will have different point of view. How as a leader they think. Sure. Okay. Sirs, I think the breakout room notification aa gaya hai, so please do join. Yeah, Mohit, I think everyone is back now. All right, thank you very much, Tanvi. So now that we have discussed about the enablers and the blockers in our leadership, that what is the things which we are doing to enable trust amongst our battalion, our team, our leadership, and what are the blockers which we think are there. Certain things are there because I was discussing it with Singh sir, that how do you handle this situation wherein you have to be assertive and strict also because you're a leader, but at the same time you have to be approachable also, because that's one of the trust enablers, that you have to be open and you have to be approachable. So I would like to know from the team, like, how do you deal with this situation? You see, majority of the things will come to you in casual talk.
They will not come in regular interviews. When you talk with the troops, you are on the ground, in the field. When you casually talk with them, when they are on duty and we are talking to them, then the things will come out. They will come out openly, automatically. Because at that time, you make them feel at ease. That's how things will come to you. They will open up and they will bring the things to you. That's how you become approachable. Not in routine interviews. It is a part of our life. We regularly take interviews because every day we are taking interviews of people going on leave, coming from leave, or settling grievances. But it is only during our, and you cannot be casual always because you have to command. You have to be assertive at most of the Yes. time. So it only depends upon style. All right, sir. So this is the way you handle it. लाइक जैसे कि आपने बोला कि अपना फ्लेक्सिबल या ओपन में तो हम लोग जो टीम ऑफ हमारी मेंबर्स है, जब भी हम टीम बनाते हैं तो उसमें हम लोगों के जितने भी आइडियाज वी वेलकम दैट, बट वंस वी टेक अ डिसीजन, जब हमने एक डिसीजन ले लिया तो इट इज ड्यूटी ऑफ कमांडर टू बी असर्टिव, टू बी फर्म ऑन हिज डिसीजंस. सो हियर असर्टिव मींस दैट इन आवर पार्ट. जो गिरी सर ने बोला मैं उसको एक बार सपोर्ट करूंगा. There are very formal ways of interaction with the troops or the officers, senior and junior. Very systematic way of कि आपने सैनिक सम्मेलन लेना है, आपने छुट्टी से जाते हुए इंटरव्यू लेना है, छुट्टी से आते हुए इंटरव्यू लेना है और मीटिंगें करनी है. ठीक है, there is set system of that. But if you want to know the real issues of the person who is really required that, then you should be casually talking to him. Say in 1200 person of in a battalion where 1200 person are there, first we just have to prioritize, matlab list out ke who should require those personal casual talk with us. Then we target those people and we just go and meet them casually, like walking with them, running with them, going to their place of duty and standing with them, started talking with them, and then come to know what's the real issue is. So these are the ways and tools by which we can casually communicate with them, and we frequently do that. Like in corporate sectors, you just if you want to know some person, you just ask him for a coffee. Chalo yaar 15 minute mein coffee pee ke aate hain. You understand that? And नहीं कॉफी नहीं है तो चल सिगरेट पी के आते हैं, और बहुत ज्यादा लंबी देर बात करनी है उससे कैजुअल, चला जाए शाम को दारू पीते हैं. You understand? These are the casual moments. You have to create those casual moments. Yes, sir. Ashwini sir's network Okay. is down, I think. Yeah. Okay. Ashwini sir, can you hear? Yes, now I can hear. Okay, so your network is gone. You were saying at last something, sir. Can you please repeat? Last 10 seconds. Till the time what you have heard me till what time? Just let me know that. So I actually missed the part. I was just connecting it. अश्विनी हम लोग दारू तक पहुंचे थे. Yeah, yes, sir. Okay, दारू तक पहुंचे. Okay. I'm just emphasizing upon, cutting it short. We just have to establish the casual contact of the target people whom we want to have some resolve some issues regarding trust. 1200 people cannot be connected like that, but we just have to identify किन से बात करनी है, छोटा ग्रुप बनाया, हमसे casual contact होना जरूरी है. फौज में हमारे साथ casual contact कैसे होता है, कैसे we just be part of that his duty. Like he is on patrolling, he is on OP duty, he is on sentry duty, or he is doing somewhere, or in the games also. ठीक है नहीं? We just go उसके गले में हाथ डाला और बात करनी शुरू कर दी. Those are casual contacts. And in corporate words, the similar example can be drawn. चला जा यार कॉफी पी के आते हैं. Say if you required 5 minutes of break, चल सिगरेट पी के आते हैं. सिगरेट नहीं पीता तो कॉफी पी के आते हैं. A little more time is there. आज शाम को बैठते हैं दारू पीते हैं. ठीक है नहीं? और उससे भी ज्यादा टाइम है, चल यार ऐसा करते हैं इस वीकेंड पे कहीं राइड करके आते हैं, लॉन्ग राइड करके आते हैं, डे राइड. और उससे ज्यादा भी टाइम किसी और को समझने के लिए चाहिए, लेट्स हैव 3 day break and go for some long drive to some hill station. Then though these kind of casual contacts, depending upon the time you required,
to know the people can be developed, and we are doing it in our way, and corporates are doing it another way. That's the only way you can come to know. So there is a lot of effort which is made at the backside of this great bonding of trust. मतलब आप लोग इतना Exactly. पूरा काम आप लोग उसके साथ में टाइम स्पेंड हर तरह से करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, and then the trust bond which is built is very strong. I would like to quote one incident. Yes, sir. Please. Validating the what Giri sir and Mathila said. As Mathila has rightly said that we have got a system of Sainik Sammelan in which we address the troops, and then after it is customary to ask that whether they have any point or any problem which they want to speak out. But as Giri sir has said that if we talk to them informally, then they open up more. They open up more. So after this Sainik seminar, 4 or 5 days back, after Sainik seminar, I was having tea with the Javans. Then while having tea, I went to the group where girls were standing and talking amongst themselves. I just went to them and asked any problem, and I started speaking. Then I saw that there was one girl who was not looking so vibrant. So I asked her, what is the problem? Have you got any problem? She said, no, sir, no. Then she said, sir, aapse akele baat karni hai. Then I took her to a side, then I spoke to him, and she really opened up and told me certain things, which obviously I cannot tell at this point. But my point is that when we speak to the troops informally, they are more likely to be opened up and tell you the things which they won't be able to tell you in a formal platform. That's it. Thank you, Manish sir, for sharing that. That's the way you actually connect I was already thinking like how you maintain that sternness, that strictness, that leadership, and at the same time you are very approachable at times and very reachable to people. That's great. Now the vision is clear. Because you see these things go a long way. कई बोलेंगे कि सीओ साहब बड़ा सख्त है, वो बोलेगा 4 को कि सीओ साहब आज मेरे पास आए थे, ऐसे बात करी, बैठ के मेरे पास बैठ गए सीओ साहब, जो बंबू का वो बना हुआ है स्टैंड था उस पे बैठ गए सीओ साहब और मेरे से बात करने लगे. So these things go a long way. Great. Well, there is so much. इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. गिरी सर का जो पॉइंट था कि जो चीज आप सुनते हैं उसको आपको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है. अगर आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता. जैसे मैं गया नाके में बैठ गया, उससे बात किया, उसने बोला सर मुझे शेल्टर चाहिए, और मैंने अगर शेल्टर नहीं बनवाया तो इसका कोई फायदा नहीं है. तो उसको जो ट्रस्ट हम अभी तभी गेन कर सकते हैं जब जो चीज हमने सुना, प्रॉब्लम पता चली, और विद इन द रिसोर्सेज उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तब जाकर के ट्रस्ट गेन करते हैं. इसीलिए ट्रस्ट एक दिन में नहीं गेन कर पाते हैं, ट्रस्ट को अर्न करना पड़ता है. ट्रस्ट इज अर्न सर, बिल्कुल. ट्रस्ट को सर अर्न करने में बहुत वक्त लगता है, एंड इट इज ब्रोकन इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. Absolutely right. Yes, sir. So now we'll be talking about the aspects of trust. Based on the research we have done with organizations, we have identified 4 aspects of it. So one is identity, truth, credibility, and relationship. We'll be emphasizing more on identity, truth, and credibility today. Relationship has completely a different session. We'll be covering part of it. Now, looking at this image, Major Brian McLaughlin. He is one of the decorated officers. Is looking into the mirror, and he's looking himself as something. So we all carry some identity. He's looking as an officer, major in the defense forces. So I want you all to fill this up and fill the answer for this. How do you identify? My suggestion is we can have a better picture of an Indian soldier. Definitely, sir. We have many. Absolutely, Countless. sir. So thank you very much. Demeaning those who have sacrificed their lives for the country. Right. That we Thank are you having very a much. foreigner in our presentation. Thank you That very can much. only be a scenario when we cannot find none. We can find. So Thank you very much, there are Virendra many sir. We'll take stalwarts the in input. our organization also and in army. Yes, sir. So that I would suggest. Exactly, sir. It is intolerable.
It is intolerable, really. Yes, sir. Being an Indian soldier, it is intolerable. I understand, but this is just an example. We definitely, as a citizen No, of but India, I examples also have to be very appreciate careful at this the point. forces. Yes, yes. Yes, I respect the forces and the contribution made. It's just to give an example that we are identifying ourselves. What do we see ourselves as? Like if I'm looking at this question, I would fill it as I am a coach, I am a teacher, I'm a son, I am a friend. So I want you all to identify this, not from a very general, like I'm a participant or I am a soldier, something different, something unique by which you connect with people. What would you say, sir? How do you identify yourself? I am Good. As per that picture, he is seeing himself. Am I looking good? My dress is good. Am I presentable? presentable. Okay. Confident. And Human in the human in a dress. yes, sir. How do you identify yourself as Human in anything? uniform. It could be. Yes, sir. Human in uniform. Oh, human in uniform. Very good. Human in uniform. Mohan sir. Confident. Ashok sir. Confident. I am confident. Okay. Looking smart. Looking smart. I'm Yeah. smart. Smart and sharp. Anything else? It could be anything. You can identify yourself in anything. Like people identify as a biker or maybe musician or anything. You can identify as a son, as a human being. I'm something. Okay, something. Pramod sir, how would you feel something as? ऐसे करके चौड़ा शरीर से कर रहा है ना, ऐसे मैं भी कुछ हूँ, ऐसे उसकी जो है उसका पोस्चर है, वो ये कह रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। I will. मीटिंग से आया हुआ है कहीं से। I think Yes, sir. he is saying, how will I look in this uniform? He is not originally meant for this type of dress or uniform. He is trying to put on this uniform and trying to say, how will I look like? Okay. I am fit. Fit. Perfect. Fit. I am cool. I am cool. एक चीज और लिखिए. I am the Yes, sir. man with the responsibility. Man with responsibility. Thank you, sir. Any other inputs? All right, so that was wonderful. So now, see, we identify ourselves with a lot of things. Now, these are the things which we identify. Some people identify with religion, nationality. So, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आप किसी इंडियन को देखेंगे तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई एक इंडियन की तरह करें. आप अगर सेम कंट्री में ही हैं और आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छा कोई पंजाबी हैं और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे रिलीजन के या दूसरे स्टेट के लोग हैं, तो आपको लगेगा यस यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ पंजाबी, राजस्थानी, एज अ तमिल, एनीथिंग. सोशल ग्रुप्स, बाइकर्स का ग्रुप होता है, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ बाइकर और मे बी अ म्यूजिशियन, एनीथिंग. टीम है आप लोग की, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ समटाइम्स विद योर यूनिट आल्सो, दैट यू आर अ यूनिट. Sometimes you identify yourself with hobby and gender also, that we are women and we are a group of male. So that's how the identity is, and that's what the impact of identity. Now the question here is that whether you use identity to differentiate and bridge, differentiate and have gaps between two people, or you identify to find similarities to bridge the gap. Basically, all these which have just shown religion, nationality, social group, gender, universities, etc.
hobbies. Yes, sir. फोन करके आया वो कि हमारे पास original- Excuse me. Tanvi, can you look into Arun sir's, मैं खोल के नहीं दे if there is a video which is blocked? Yeah, I'll just check if he's trying to say something. And Ajay sir also is facing a challenge with video and mic. Okay, okay. We'll connect with them. Okay. Sure. ये हो जाए तो बताना। एक हो गया ना, मतलब एक ही रहने दो। Yes, sir. You were saying. I'm so sorry to interrupt you. Mahindra sir. Basically, in the forces, these things are. सर वीडियो नहीं आ रहा किसी का। वीडियो किसका है? Because religion, gender, nationality, and the social group. Because we are living under the one flag here, so all these things are immaterial. Absolutely. It is because religion, gender, because gender is nowadays the very relevant matter. So, because girls are also, as Johnny is in the forces, officer, SOs also. So, gender nowadays is though the very relevant topic, but we are observing and taking as a no matter, because they have equal rights everywhere and the same in the forces also. Yes, Mahindra sir, यहाँ पे sorry to interrupt. Religion, as a religion, तो religion तो सर्वधर्म हमारे यहाँ स्थल होता है, उसमें ऐसा कोई है, welcome for all. Mr. Mohit, मैं एक बात इसमें बोलना Nationality, you know the nationality is Indian, उसमें कोई वो नहीं है. But अब वो जो आपने factor बताया कि if you are abroad, then you can meet if anyone is the Indian, okay, just okay, hello, hi. That is the thing. Yes, sir. But the things, these things are identity हो सकती इनकी बाहर, but as per concern in the BSF, it is not like that. Sir, I'll say that by what I'm connecting it to. Ashwini sir, yes. I just want to tell that identity, these groups are irrelevant with respect to us. Only relevancy in these fields are the team or organization. So when we see us, when we wear the uniform, we see us as the representative of the BSF or some battalion or frontier. That's organization के हिसाब से we see us as a member of the organization, BSF. Then uske baad se sub organization like I am from frontier, I am from battalion, I am from that. These teams basically. Absolutely. So Baki these religion, we don't identify ourselves in organization as a religion, not identify as a gender. यूनिवर्सिटी का तो मतलब ही भूल जाए, वो छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं कि अच्छा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भाई मैं एक और एग्जांपल hold on sir, let me finish. Yes, okay, go ahead. And nationality wali baat aati hai, this is also relevant when you are outside India. So some people go to serve outside India, then this picture come कि you feel like I am Indian over there in the group of others, other police organization people, then and social groups, these doesn't matter. So it is subjective basically. And if you want to take us from this to somewhere else, that will be a different thing. Yes. Let's see where you want to take us. Okay. Yes. So what I'm trying to say by this identity is, sorry sir, अब आप बोलो sir. वो थोड़ा thought process टूट जाता है बीच में. No problem. That's okay. See. Yes, sir. I was deployed in the Kupwara. So one of the officer of the army, he asked that, sir, BSF is having the troops and the officers from all sections of the society. So how there might be not the cohesiveness to fight anything counter to enemy. तो मैंने उनको बोला सर हमारे पास उस तरह से आर्मी की तरह से नहीं है कहीं कोई उनकी रेजिमेंट्स हैं सब सपोज दैट जैसे कोई माइंड मत करे जाट रेजिमेंट है राजपूत रेजिमेंट है लाइक दैट पर मैंने कहा बीएसएफ कभी पीछे पैर नहीं मारती कभी मैदान जंग कभी बीएसएफ पीछे हटती नहीं और आपको ये गलत फहमी हो रही नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है मैंने कहा नहीं सर आप आज तक कोई एग्जांपल साइट करिए तो कहे हाँ ऐसा तो नहीं है
तो बीएसएफ ऐसा एक फोर्स है जो कभी पीछे पैर नहीं मारता, पीछे पैर मारने के बाद विड्रा नहीं करता। हमेशा जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे पूरे शिद्दत के साथ जो है पूरी करते हैं। Accomplish the duty with the high regard. Thanks. Absolutely, sir. Just I wanted to add one line. Being uniform force, we are being only uniformity. So that is the only identity of what we have. Nothing else. Great. Supriya sir and Mahindra sir and Ashwini sir, thank you for your inputs. By identity here, we are connecting it to the trust. And when we say identity, we all identify ourselves with something. What I meant was like this. हम कभी अलग अलग सिचुएशन में हम कभी किसी अपने आप को आइडेंटिफाई प्रोफेशन से करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी से, कभी जेंडर्स। तो हम आइडेंटिटी का कर क्या रहे हैं? हम उस आइडेंटिटी को हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिएट करें? बिकॉज you would know better than anybody else that in forces you have people from diverse religion, diverse backgrounds, and diverse states, and that diversity only makes your team and unit strong. So that's what the benefit of having different identities. Like आपने अंडरस्टैंडिंग अदर्स वाला अगर आपने अटेंड किया है या फिर अब नेक्स्ट करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स में अलग अलग पर्सनालिटी होती है, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, इंस्पायरर्स होते हैं, रिफ्लेक्टर्स और सपोर्टर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स अगर ड्राइवर्स साथ में रहेंगे तो वो दोनों अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ड्राइवर्स और इंस्पायरर्स हैं साथ में तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरह से हमारी यस सर सारे जितने आपने दिए है ना, जी सर, सारे रेलिवेंट हैं और इफेक्ट करते हैं ये। जी सर, ठीक है ना, कुछ जो है ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं। राइट सर। ओवरऑल वी आर सोशल एनिमल और कम्स फ्रॉम ए सोसाइटी। सोसाइटी में भी जो उठापटक होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छे से पड़ता है, लेकिन उसके वो ओवरकम कैसे किया जाए इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सारे आपके जेंडर भी करता है, रिलीजन भी करता है, नेशनलिटी, सोशल ग्रुप, नेशनलिटी में इसमें स्टेट वाला आ जाएगा, नेटिविटी कर दो, सोशल ग्रुप सारे करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, इट्स ए चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। प्रमोद सर, बिल्कुल ये आपने सही बात की है। कभी कभी हम लोग जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं बिना डेटा को वेरीफाई किए और सिलेक्ट किए। अगर आपने लैडर ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में सुना है, मतलब हमने अगर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, सभी की लाइफ में ये सब हैपनिंग हुई है, सबने जो है इसको जो है ऑब्जर्व भी किया, झेला भी है हर चीज के नाम पे। तो ऐसी बात नहीं है, ये जब सोसाइटी है, सोसाइटी का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। ओवरऑल हम कहाँ से आ रहे हैं, हम सोसाइटी से तो आ रहे हैं। सोसाइटी में जो होगा उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर रहेगा। अब आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, उसके ऊपर आपका एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, कि कहाँ पे जो है कम किया जा सकता है। तो इससे हम अछूते नहीं है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर। मोहित जी, जो अग्रवाल जी बोल रहे हैं ये एब्सोल्युटली राइट है। नॉट इवन जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन जो है बेल्ट फोर्स में भी ये सब चीजें देखने को सबको मिलता है। अब वो बात अलग है कि कोई इस चीज को हाईलाइट करता है, कोई हाईलाइट नहीं कर पाता है। अदरवाइज ये जेंडर भी है, उसमें यूज ठीक ठाक उसमें होता दिखता है, और रिलीजन भी दिखता है, नेशनलिटी भी दिखती है, सोशल ग्रुप भी दिखता है, टीम वर्क भी दिखता है, यूनिवर्सिटी सब कुछ दिखता है। ये बशर्ते क्या है कि हम लोग वी आर ए यूनिफॉर्म टीम, तो इसमें हम उस चीज को भुलाना पड़ता है, जबरदस्ती भुलाना पड़ता है, और क्योंकि हम उसे बेल्ट फोर्स कराते हैं हम इस चीज को छोड़ते हैं। बट कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ लोग लेके अपना प्री माइंड सेटअप लेके चलते हैं। तो ये सब चीज जो है उन्होंने सही बोला है कि बिल्कुल कहीं न कहीं इफेक्ट हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री। Yes, yes, GR Singh sir, you wanted to say something?
सर आप क्या मानते हैं कि आइडेंटिटी जो आप लोग के यहाँ, हाँ जी मिस्टर मोहित जी सर, we can quote numbers of examples. ये किताब लिख सकता हूँ, किताब, एक बुक जो है पब्लिश करवा सकता हूँ। सर आप कोई शेयर कीजिए एग्जांपल वेरे ना आपको लगता है कि डिफरेंट आइडेंटिटीज एक टीम के अंदर होना जरूरी है। ये सारे के सारे एक्चुअली में क्या है, ये चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस को जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता है। देखो जैसे जेंडर का है, जेंडर के लिए क्या जेंडर यहाँ पे इक्वलिटी है जेंडर की? यहाँ पे कई इंस्ट्रक्शन जो है जेंडर के लिए अलग अलग आए हुए हैं। नहीं है इक्वलिटी, कहाँ वो में, लेकिन हम जो है आइडेंटिटी की अलग तरह से मतलब सोचें अगर, अच्छा नहीं है, सारे के सारे कोई माइक्रो लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं, कोई मैक्रो लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो कई चीजें तो बहुत ही डिजास्टर लेवल पे पहुंच चुकी हैं, डिजास्टर लेवल पे। सर आप अगर कुछ शेयर करेंगे अगर कुछ तो कोई आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई अच्छा है, सारी की सारी हम लोगों के यहाँ रिपोर्ट रिटर्न मांगी जाती है, रिपोर्ट रिटर्न स्टेट के हिसाब से मांगी जाती है, लैंग्वेज के हिसाब से मांगी जाती है, रिलीजन के हिसाब से मांगी जाती है, वर्ग के हिसाब से मांगी जाती है, वर्ग के हिसाब से। तो जब होगा नहीं उसमें तो कैसे मांगी जाएगी वो? I understand that. फिर Absolutely. आंख बंद करने से क्या समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? प्रमोद जी जरा यूनिवर्सिटी का भी डिफाइन करें जरा। यूनिवर्सिटी क्या, अभी जोधपुर की यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं भाई अब इस यूनिवर्सिटी से है, और वो उसी में जो है कर देते हैं कांड, बोले हमारी यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ है। तो यार छोड़ो यार, उसमें डिबेट में नहीं, मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है तो यूनिवर्सिटी चाहे यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ हो या जेएनयू के हैं, वो जेएनयू के वो अपने आप में मिल जाएंगे जेएनयू के, तो वो सोचेंगे भाई हम तो भाई भाई हैं। वो कहते हैं हमारा भाई जेएनयू का निकला हुआ मंत्री बैठा हुआ है, तो उनमें भी जो है ऐसी रहेगी बॉन्डिंग। एक्सेप्शन तो रहेगा भाई, एक्सेप्शन तो रहेगा। एक्सेप्शन नहीं है भाई, तो मैं इसलिए अग्रवाल जी सर हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज लेते हैं वो भी है। सर मैं अगर आपको बोलूं कि मैं खुद जोधपुर से हूँ एंड मैं खुद जब बाहर ट्रैवल किया और बाहर दूसरी जगहों पे गया तो वहां पे मेरे को अलग अलग लोग मिले, तो मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मेरे को मेरे शहर के या मेरे स्टेट के लोग मिले। तो आइडेंटिटी का यहाँ पर ये है कि आप आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ की तरह यूज ले रहे हो या फिर आप उसको एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज ले रहे हो। नहीं, आइडेंटिटी ऑलवेज यार नेगेटिव इफेक्ट। आइडेंटिटी मोहित जी मैं एक एग्जांपल में कोट करना चाह रहा हूँ, आपने इक्वालिटी खत्म हो जाती है वहां पे। आइडेंटिटी यदि आइडेंटिटी है तो इक्वालिटी नहीं है। अश्वनी सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर आप म्यूट पे हैं अश्वनी सर। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सारी चीजें जो है वी जस्ट हैव टू अवॉइड, एंड अब आप इसको किस रेफरेंस में यूज करेंगे, यस डिसाइड किस रेफरेंस में। या अब मैं आपको बताता हूँ, आप इन सारी चीजों को उस रेफरेंस में यूज करना चाह रहे हैं। क्या जेंडर की ग्रुपिंग से ट्रस्ट लेवल बढ़ता है? फीमेल के साथ ही ज्यादा ट्रस्ट फील करेगी? यू जस्ट वांट टू से दैट। रिलीजन के साथ, इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ रिलीजन, क्या उनमें ट्रस्ट ज्यादा होगा? Now I understand that you just want to utilize all these things like that, and this exists everywhere. My point was that as a BSF organization, in reference to that photograph, as a photograph, one person is seeing himself, okay? And you ask a question, how you are identifying with that photograph. So I said कि उस photograph में मैं अपने आप को as a BSF person देखता हूँ. I don't see as a man of religion. I don't see my nationality. I don't see my gender. For me, anybody who's wearing the BSF uniform is a BSF person.
You Great, sir. understand that this was Absolutely. with reference to that photograph only. Absolutely. I Now understand. you had put in these groups or these criterias. On that, with that notation, with the notion of this photograph, I said that these are not existed in BSF. You understand now? Yeah. Yes, And sir. I understand. now I know how you are going to use that. You are Yes. going to use that कि gender, religion, nationality, social group, team organization, hobby. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उस ग्रुप में एक बिलोंगिंग में ट्रस्ट लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा. Right? You want to utilize that? Right, sir. So that's my explanation. Great, sir. Thank Mr. you. Thank you. Pramod, do you perform like that? So we would like to conclude the session, and so this is what is important for the trust is built on several aspects, and the four more important aspects are identity is one of it, truth, credibility, and relationship. So yes, Mahendra sir, you were saying something. I think Mohit, thank you so much for that session. I think we will wrap up for the day. I think it's been a very time. Thank you so much, Mohit, for that session. Thank you very much. It So, was and fun. thanks, everyone. We had very good insights, great deliberations, and it was very nice, hearing from all the our commandants, different ways that they, the perspectives on trust. As such as Soch say, Ashwani sir, also thank you for that fantastic insight towards the end. It's always great to hear the way Manish sir had talked about, Virendra sir had talked about certain ways that once you reach that commandant level, also the way you guys, try to enable trust. आप लोग जब share किए और narratives on, हम going out of the way, we know that after a certain level, once you reach a commandant position, it's difficult by the virtue of the post. I think Virendra sir was mentioning it in a breakout session. It's very difficult to enable trust and to bring out people, ask them to communicate or under commands. But what are the tools? What are the various ways? So it was a fantastic exchange. I'm glad to have been part of this session. So thank you so much, Mohit. Thank you very much. Thank you. With this, we'll wrap up today's workshop. Thank you to all our sirs. Thank you for again the wonderful participation. Thank you for fantastic insights. कल हमारे लिए, to give you a brief idea, कल हम building strong relationships का जो है 7 talents of a leader, we will have sessions on building strong teams, which will be taken by Ravi. I mean, you're very familiar with Ravi. And we will also have a session on human bonding in your forces with Dr. Rajat Mitra. And we will also have a session on building organization culture with Harminder ma'am, who is a very senior professor and dean of AMT. So looking forward to your participation tomorrow, sirs. And please take the day off. मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा. Sometimes I feel like when you see me on screen, I am that website में होता है ना ऐसे ad pop up करता रहता है. You're like close कर दो अभी के लिए. तो मेरे को ऐसे feeling आता है. So I will not take much of your time. Please do provide feedback to us. I think Tanvi, we can provide the feedback for the chat. Thank you so much, sirs, for the participation. Good evening to you all and Jai Hind, sirs.